Welcome student in second session from your textbook chapter number 11, the human eye and the colorful world. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the human eye, construction and working of the human eye, function of iris and pupil and rods and cones which are present on retina. So today we are going to discuss about the accommodation and defect of vision and their correction. A normal eye can see the distant object as well as the nearby object clearly due to its power accommodation. मीन्स जो नॉर्मल आई रहती है उसका नियर विजन और फार विजन दोनों ही क्या होता है, क्लियरली रहता है विद द हेल्प ऑफ दैट पावर एक्मोडेशन. क्लियर दिस वन. सो बिफोर वी डिस्कस द पावर एक्मोडेशन ऑफ द आई, we should know the difference between the distant object and nearby object from the point of view the light rays received from them. So the rays of light coming from a distant object are parallel, means जो rays distance object से आती है वो कैसी होती है, parallel to one another when they reach the eye. means जब कोई rays डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आती है तो वो पैरेलल रेज टू द आई. लुक एट दिस फिगर. एक्चुअली द रेज ऑफ लाइट गिवन आउट बाय द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग. तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से जब कोई रेज आती है तो वो डाइवर्जिंग होती है. डाइवर्जिंग मीन्स स्प्रेड. ओके, सो डाइवर्जिंग इन द बिगनिंग बट दे बिकम पैरेलल व्हेन they reach the eye after traveling a large distance. मीन्स जब वो लार्ज डिस्टेंस कवर करके आती है और जब जाके वो आई पे पहुंचती है तो क्या होता है कि वो पैरेलल हो जाती है. द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नीड ए कॉन्वेक्स आई लेंस, ओके, ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर to converge them or focus them to form an image on the retina of the eye. You know that cornea, that is also convex lens, and one eye lens is also there in our eye, so that is also convex. और convex जो lens रहता है, you know very well that have the converging power. तो वो क्या करता है, जो distance object से जो parallel rays आ रही है, so you need a convex lens of low converging power, जो means low converging power पे उस rays को converge करे, okay, and focus them to form an image on the retina of the eye. You know that. और इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे. तो कन्वर्स करने के बाद में फोकस करता है और इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है. सो द कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर is the one having a large focal length and it is quite thin. Now second, the rays of light coming from a nearby object are diverging when they reach the eye. So जब लाइट रेस नियर बाय ऑब्जेक्ट से आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है. लुक एट हियर, ओके, डाइवर्जिंग रेस फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट. सो द डाइवर्जिंग रेस coming from a nearby object need a convex lens of high converging power. तो यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए जो आई लेंस है वो हाई कन्वर्जिंग पावर का लगेगा, ओके, टू कन्वर्स, क्योंकि ये डाइवर्ज और नियर बाय ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है. सो दैट डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाय ऑब्जेक्ट नीड ए कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर to converge them or focus them to form an image on the retina of the eye. Clear this one? The convex eye lens of high converging power is the one having a short focal length. तो जिसमें converging power high रहता है उसमें focal length short रहती है and it is quite thick. Clear this one? And जिसमें converging power low होगा, clear, तो उसमें फोकल लेंथ कैसी रहती है, लार्ज रहती है और क्वाइट थीन रहती है. सो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, it will now be easy for us to understand the power of accommodation of the eye. Clear this one? Now, accommodation, a normal eye can see the distance object as well as the nearby object clearly. You know that, okay? We will now discuss how the eye is able to focus the object lying at various distance. Okay? तो कैसे various distance पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको कैसे फोकस करके
इमेज फॉर्म होती है और वो क्लियरली आई देख सकती है. ओके, सो एन आई कैन फोकस द इमेजेस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस. ओके, मीन्स जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी तभी वो इजीली देख पाते हैं इमेज. सो उसके लिए फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है. द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. द सिलियरी मसल्स कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट and flexible eye lens, okay, and hence its focal length, which in turns changes the converging power of the eye lens. okay, so जब उसकी focal length change होती है, okay, और वो भी thickness और thin हो जाता है eye lens, तो उसके जो converging power है वो लेंस की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. क्लियर दिस? सो व्हेन द आई इज लुकिंग एट ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब आई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और एट इंफिनिटी पे जब देखती है, सो देन द सिलियरी मसल्स ऑफ द आई आर फुली रिलैक्स्ड. तो कैसी हो जाती है, फुली रिलैक्स्ड हो जाती है सिलियरी मसल्स. ओके, सो the relaxed ciliary muscles of the eye pull the suspensory ligament attached to the eye lens tightly. तो जो रिलैक्स आई सिलियरी मसल्स रहती है तो पुल करती है वो सस्पेंसरी लिगामेंट को, जो इसका एक एंड आई लेंस से अटैच रहता है और एक एंड सिलियरी मसल से. ओके, द रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स ऑफ द आई पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच टू द आई लेंस टाइटली. सो द सस्पेंसरी लिगामेंट इन टर्न pull the eye lens, due to which eye lens get stretched and becomes thin. सस्पेंसरी लिगामेंट जो पुल होगा तो उसका एक एंड जो आई लेंस से जो अटैच है तो वो भी क्या होगा, आई लेंस में भी स्ट्रेच आएगा. इस वजह से जो आई लेंस है वो थीन हो जाता है और लेस कन्वेक्स हो जाता है. क्लियर? सो लुक एट दैट फिगर ए. Thin eye lens has large focal length but its converging power is small. Okay, remember that जब फोकल लेंथ लार्ज होता है तो कन्वर्जिंग पावर स्मॉल रहती है. तो द थीन आई लेंस हैज लार्ज फोकल लेंथ बट इट्स कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉल. द स्मॉल कन्वर्जिंग पावर ऑफ थीन आई लेंस इज सफिशिएंट टू कन्वर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट coming from a distance object to form an image on the retina of the eye. Okay, look at that figure A. So जो स्मॉल कन्वर्जिंग जो थीन लेंस है, ओके, तो वो सफिशियंट रहता है टू कन्वर्ज द पैरेलल रेज. ओके, जो थीन आई लेंस हो जाता है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर भी स्मॉल हो जाती है, तो वो सफिशियंट रहता है टू कन्वर्ज द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. ओके, उसके बाद में क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है ऑन द रेटिना ऑफ द आई. क्लियर दिस वन? व्हेन द आई इज लुकिंग एट ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट the eye is said to be unaccommodated. Okay, जब distance object में eye देखती है तो it is said to be unaccommodated because it is the relaxed state of the eye. The thin eye lens is not powerful enough to converge the diverging light rays coming from the nearby object onto the retina. Retina पे image form नहीं कर पाती है. Okay, जो thin eye lens रहता है. So टू लुक एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को आई देखती है द आई लेंस हैज टू चेंज इट्स शेप. तो आई लेंस क्या करता है, उसके शेप को चेंज करता है एंड बिकम थिक और मोर कन्वेक्स. तो आई लेंस जो है अपनी शेप को चेंज करता है, इट मीन्स दैट चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑल्सो. ओके, एंड बिकम थिक, और वो थिक हो जाता है, इट मीन्स दैट मोर कॉन्वेक्स टू इंक्रीज इट्स कन्वर्जिंग पावर. तो कन्वर्जिंग पावर को अब क्या करेगा, वो इंक्रीज करता है. ओके, सो व्हेन द सेम आई हैज टू लुक एट ए नियर बाय ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल्स ऑफ द आईज कॉन्ट्रैक्ट. तो जब आप पास में कोई चीज को देखते हो तो आई की जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो कॉन्ट्रैक्टेड सिलियरी मसल्स मेक द सस्पेंसरी लिगामेंट लूज. तो जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो लूज हो जाता है. Okay, so when the suspensory ligament become loose, they stop pulling the eye lens. तो जैसे ही suspensory ligament loose हो जाता है तो वो eye lens को pulling करना stop कर देता है. So the eye lens bulges under its own elasticity because you know that
आई लेंस इज फ्लेक्सिबल, ओके, एंड सॉफ्ट. सो उसकी ओन जो इलास्टिसिटी है इस वजह से वो बल्जिंग हो जाता है एंड बिकम्स थिक और मोर कन्वेक्स. लुक एट दैट फिगर बी. So the thick eye lens has a small focal length, but its converging power is large. Since the converging power of eye lens increases, the thick eye lens can converge the diverging light rays coming from the nearby object to form an image onto the retina of the eye. Clear this one? In that figure B, in which an object O is near to the eye. जब ऑब्जेक्ट नियर होता है O, जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ओके, इट हैज बीन फोकस्ड बाय द थिक आई लेंस. तो ये फोकस्ड होता है बाय द थिक आई लेंस टू फॉर्म एन इमेज आई. तो इमेज वहां पे आई, इमेज मीन्स आई से इंडिकेट करते, ओके, टू फॉर्म एन इमेज आई on the retina. When the eye lens becomes more convex to focus the nearby object, the eye lens is said to be accommodated. So we can now say that the ability of an eye to focus the distant object as well as the nearby object on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation. Eye की ability होती है, okay, to focus the distance object as well as the nearby object on the retina to form the image by changing its focal length, okay, with the help of that lens is called accommodation. Clear this one? The maximum accommodation of a normal eye is reached when the object is at a distance of about 25 centimeter from the eye. After this, the ciliary muscles cannot make the eye lens more thick. So an object placed at a distance of less than 25 centimeter cannot be seen clearly by normal eye because all the power of accommodation of the eye has already been exhausted. So thus, a normal eye has a power of accommodation which enables object as far as infinity and as close at 25 centimeter to be focused on the retina. Now, range of vision of a normal human eye. We will first understand the meaning of far point and near point of an eye. Okay, the farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है farthest point पे उसको clearly देख सकती है. So that is called the far point of the eye. Or nearest point, okay, near point, the nearest point up to which the eye can see an object clearly without any strain, means eyes पे कोई भी strain नहीं होता है and can see clearly. So that is called the near point of the eye. Clear this one? So the near point of a normal human eye is at a distance of 25 centimeter from the eye. Now next one, defects of vision and their correction. The ability to see is called vision. It is also called eyesight. Sometimes the eye of a person cannot focus the image of an object on the retina properly. Okay. So in such cases, the vision of a person becomes blur. ओके तो क्या होता है जब रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो पाती, जो विजन होता है पर्सन का वो ब्लर होने लगता है. ओके, एंड ही कैन नॉट सी either the distance object or nearby object clearly and comfortably. So the person is said to be have a defect of vision. जो person distance object और nearby object दोनों ही clearly और comfortably नहीं देख पाता है, so that is called defect of vision. The defect of vision are also known as defect of eye. There are three common defects of vision. These are myopia, hypermetropia, presbyopia. These are the refractive defect of vision because they are caused by the incorrect refraction of light rays by the eye lens. So these defects of visions can be corrected by using suitable, that is spherical lenses, convex lens or concave lens. So these lenses are usually used in the form of eyeglasses or spectacles. Okay. So we will now describe all these defects of vision and their correction one by one. So let us start with myopia. So myopia means a short sightedness or near sightedness. A short sight person means that short sight of person is normal but his long sight, okay, means that to see distance object is defective.
मीन्स वो नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख सकता है, पर जो फारदेस्ट जो लॉन्ग साइड जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख सकता. ओके, सो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. क्लियर दिस वन मीन्स मायोपिया डिफेक्ट वो होता है जिसमें पर्सन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हैविंग द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया and sitting on the back benches in the class cannot read the writing on blackboard clearly, though he can read his book comfortably. So the defect of eye called myopia is caused, तो ये क्यों caused होता है? Due to high converging power of eye lens. Second, due to eyeball being too long, or in some cases in an eye suffering from myopia. Eye myopia से suffering होती है. The ciliary muscles attached to the eye lens do not relax sufficiently to make the eye lens thinner. जब ciliary muscles relax होती है तो ही eye lens thinner होता है. Okay, and to reduce its converging power, तो उसका converging power reduce होता है. So due to the greater converging power of the eye lens in myopic eye, the image of distance object is formed in front of the retina and hence the eye cannot see it clearly. ओके, सो इस वजह से मीन्स आई क्लियरली नहीं देख पाते. इन अदर केसेस इन द आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया द आई बॉल इज टू लॉन्ग. ओके, जब आई बॉल टू लॉन्ग हो जाती है, ड्यू टू विच द रेटिना इज एट ए लार्जर डिस्टेंस. ओके, तो रेटिना लार्जर डिस्टेंस पे रहता है फ्रॉम द आई लेंस. So this condition also result in formation of image of a distance object in front of the retina. तो इस कंडीशन में भी इमेज रेटिना के फ्रंट पे बनती है. सो इवन दो द आई लेंस में हैव करेक्ट कन्वर्जिंग पावर, मीन्स आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर करेक्ट है, जो है दोनों ही कंडीशन में इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होती है. सो दैट्स व्हाई दैट सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया. ओके, so this shows in figure A an eye having the defect called myopia. In this case, the parallel rays of light coming from the distance object O are converged to form an image eye in front of the retina. So due to which the eye cannot see the distance object clearly. The image is formed in front of the retina either due to high converging power of eye lens or due to eyeball being too long. Okay, so the far point of eye having myopia is at point F. Look at that figure. Okay, B. So which is less than infinity. Note that the rays of light coming from the person's far point F, तो F से जब light rays कमी हुई, can just be focused by his eyes on the retina. तो कहाँ पे focus हो रही है? On the retina shown in that figure. So this means that if the distance object can be made to appear as if it were at the far point F of this eye, then the eye can see it clearly. This is done by putting a concave lens in front of the eye. Myopia is corrected by using specules containing concave lenses. So look at that in figure C. Okay, उसमें जब कॉन्केव लेंस, जहाँ पे L जो दिख रहा है आपको कॉन्केव लेंस है, उससे जब यूज किया जाता है तो इमेज क्लियरली रेटिना पे फॉर्म होती है. ओके, सो व्हेन ए कॉन्केव लेंस, ओके कॉन्केव लेंस आपको पता है इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. सो व्हेन ए कॉन्केव लेंस एल ऑफ सुटेबल पावर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मायोपिक आई एज शोन इन दैट फिगर, देन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब पैरेलल लाइन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आती है, ओके, आर फर्स्ट डाइवर्ज, पहले वो क्या होगी? डाइवर्ज होंगी बाय द कॉन्केव लेंस. ड्यू टू दिस द कॉन्केव लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज. तो कॉन्केव जो लेंस है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट एफ. तो वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी. ओके, ऑफ दिस मायोपिक आई. सो सिंस द रेज ऑफ लाइट नाउ अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम द आइज फार पॉइंट. अब रेज कहाँ से ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है? एफ से आ रही है. ओके, इट इज अपियर. ओके, लाइट नाउ अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम द आइज फार पॉइंट एफ. दे कैन बी इजीली फोकस्ड. अब वो इजीली फोकस्ड होंगी बाय द आई लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना. अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? रेटिना पे. सो नोट दैट द कॉन्केव लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया शुड बी ऑफ सच फोकल लेंथ, ओके, और पावर दैट इट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज. तो पहले
कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है और उसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है दैट इट प्रोड्यूस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट at the far point of the myopia. It should be noted that the whole purpose of using a concave lens here is to reduce the converging power of the eye lens. तो मायोपिक जो पर्सन रहता है, मायोपिक जो आई रहती है, ओके, मायोपिक आई के लिए कॉन्केव लेंस इसलिए यूज किया जाता है रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, क्योंकि आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस कर देंगे तो इमेज इजीली रेटिना पे फॉर्म होती है. कॉन्केव लेंस used here decrease the converging power of the eye lens and helps in forming the image of distant object on the retina of the myopic eye. Clear this one? Now next one, hypermetropia, long sightedness or far sightedness. A long sightedness person means that the long sight of person is normal. जो उसकी long sight है means to see distance object वो normal रहती है, but his short sight to see near object is defective. मीन्स हाइपरमेट्रोमिया में वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसमें डिफेक्ट रहता है. ओके, सो हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. मीन्स वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है. ओके, सो दो ही कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट रीड ए बुक क्लियरली. मीन्स वो बुक उसके पास में वो क्लियरली उसको रीड नहीं कर सकता है. ओके, एंड कंफर्टेबली. सो दो ही कैन रीड द नंबर ऑफ डिस्टेंस बस क्लियरली, पर द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर्स अवे. सो नोट दैट हाइपरमेट्रोपिया is just the opposite of myopia. Clear? Hypermetropia किसकी opposite है? myopia की. The defect of eye called hypermetropia is caused. Okay? So ये defect कैसे cause होता है? So there is two cause due to low converging power of eye lens. अगर second due to eyeball being too short और eyeball short होंगी. ये hypermetropia just opposite है myopia की. आपने उसमें देखा था कि हाई कन्वर्जिंग पावर होता है आई लेंस का तो मायोपिया कॉस्ट होता है, और आई बॉल बींग टू लॉन्ग, ओके, आई बॉल लॉन्ग हो जाती है तो भी मायोपिया कॉज होता है. और इसमें क्या आपने देखा हाइपरमेट्रोपिया में लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस एंड आई बॉल बींग टू शॉर्ट. क्लियर दिस वन? सो इन सम केसेस द सिलियरी मसल्स अटैच टू द आई लेंस बिकम वीक. तो आई सिलियरी मसल से जो वीक हो जाती है एंड कैन नॉट मेक द आई लेंस थिकर, और वो आई लेंस को थिकर नहीं कर सकती टू इंक्रीज इट्स कन्वर्जिंग पावर. सो जब आई लेंस थिकर होता है तो इंक्रीज करता है कन्वर्जिंग पावर. सो ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इन एन आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. ओके, क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन की जो आई रहती है उसमें इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द रेटिना. ओके, बट जो मायोपिया था उसमें आपने क्या देखा था कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज फॉर्म होती थी, और इसमें क्या हो रहा है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. अब यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, एंड हैंस द आई कैन नॉट सी इट क्लियरली, और इसलिए आई क्लियरली नहीं देख सकती. इन अदर केसेस इन एन आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया द आई बॉल इज टू शॉर्ट, और आई बॉल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है ड्यू टू विच द रेटिना is at a smaller distance from the eye lens. So this condition also result in the formation of image of nearby object behind the retina. तो इसमें भी image behind the retina form होती है even though the eye lens may have correct converging power. और eye lens का converging power अच्छा है पर eyeball too short है तो भी hypermetropia disease caused होता है. Clear this one? In that figure A shows an eye having a defect called hypermetropia. Okay. In this case, the diverging rays of light coming from the nearby object O. Okay, nearby object से जब rays आती है, so place at the normal near point N. तो कहाँ पे वो place हो रही है? Near object. Okay, near point N पे. So 25 near point आपको पता है 25 सेंटीमीटर from the eye. Okay, इतना होता है near point. सो आर कन्वर्स टू फॉर्म एन इमेज आई. कहाँ पे कन्वर्स कर रही है इमेज को? बिहाइंड द रेटिना. ओके, आर कन्वर्स टू फॉर्म एन इमेज आई बिहाइंड द रेटिना ड्यू टू विच द आई कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. इसलिए नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली आई नहीं देख सकती. सो द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना आइदर ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस और बिकॉज ऑफ आई बॉल बीइंग
too short. The near point of an eye having hypermetropia is at point N, which is more than 25 centimeter. Look at the figure B. Near point ऑब्जेक्ट को जब आपने 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर पे रखा तो आपने देखा कि इमेज रेटिना पे फॉर्म हुई. Okay, so the diverging rays of light coming from a hypermetropia person near point can just be focused by his eye. Okay, on the retina. By his eye on the retina as shown in that figure B. So this means that if the object placed at the normal near point N can be made to appear as if it were placed at this eye's near point N, then the eye will be able to see it clearly. जब नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट को मोर देन 25 सेंटीमीटर एडजस्ट करते हैं तो आई क्लियरली देख सकती है. तो दिस कैन बी डन बाय पुटिंग ए कॉन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई. तो ये ऐसा आप कैसे कर सकते हो कि आप बार बार तो ऐसे मीन्स डिस्टेंस पे रख के आप उसको रीड नहीं कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी बुक्स को, पेपर को, किसी भी या थिंग्स को आप मोर देन 25 सेंटीमीटर एडजस्ट करके तो आप नहीं देख सकते हो. सो दैट्स वाई by putting a convex lens in front of the eye, then we can see the clearly. Okay, so hypermetropia is corrected by using speckles containing convex lens. Means आपको ऐसे speckles use करने चाहिए जिसमें convex lens हो. Look at that. Okay, in figure C. So when a convex lens, आपको पता है convex lens क्या है? Converging lens है. When a convex lens L of suitable power is placed in front of the hypermetropic eye, as shown in that figure, then the diverging rays of light coming from the nearby object are first converged. So nearby object से जब rays आएगी तो वो पहले converge होंगी by this convex lens. So due to this convex lens form a virtual image, फिर उससे virtual image form होंगी of the nearby object. Okay, so at the near point N of the hypermetropic eye, since the rays of light now appear to be coming from the eye's near point, फिर ऐसा appear होता है कि नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स 25 सेंटीमीटर अवे से ही मीन्स वो नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है. सो दैट द रेज ऑफ लाइट नाउ अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस आईज नियर पॉइंट एंड सो दे कैन बी इजीली फोकस बाय द आई लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना. फिर इजीली फोकस होती है इमेज ऑन द रेटिना. क्लियर? So the convex lens used for correcting hypermetropia should be of such a focal length that it forms a virtual image of the object at the near point and of the hypermetropic eye. तो near point क्या होगा उसका 25 centimeter. Clear this one? So it should be noted that the whole purpose of using a convex lens here is hypermetropic eye में तो क्यों यूज किया जाता है कन्वेक्स लेंस? टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस. तो कन्वर्जिंग पावर उसका तो आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करने के लिए कन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है. क्लियर दिस वन? सो द कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन स्पेकल इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर of eye lens and helps in forming the image of nearby object on the retina of the eye. Myopia and hypermetropia are the two most common defect of vision. We will now study another defect of vision which occurs in old age. It is called presbyopia. Okay, means अब आप जो स्टडी करेंगे वो ओल्ड एज के पर्सन को ये डिफेक्ट होता है आईज में. सो presbyopia means that in old age due to ciliary muscles becoming weak and the eye lens becoming inflexible. ओके और रिजिड मीन्स क्या होता है कि जब ओल्ड एज होती है तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है और आई लेंस भी क्या होता है इनफ्लेक्सिबल और वो रिजिड हो जाता है. द आई लॉसेज इट्स पावर ऑफ एक्मोडेशन. तो आई जो है एक्मोडेशन के पावर को लूज कर देती है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो इसीलिए जो ओल्ड पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते. So this leads to the defect called presbyopia. So presbyopia is that defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object clearly due to the loss of power of accommodation of the eye. Clear this one? So for example, an old person having presbyopia cannot read a book or newspaper. Presbyopia means जो old person रहते हैं तो वो न्यूज़पेपर और बुक को रीड नहीं कर पाते कंफर्टेबली एंड क्लियरली without speckles. Presbyopia occurs in old age due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. The near point of the old person having presbyopia gradually recedes and becomes much more
देन 25 सेंटीमीटर अवे। आपको पता है नियर पॉइंट नॉर्मल आई का जो रहता है 25 सेंटीमीटर पे रहता है, ओके, बट जो ओल्ड एजेस पर्सन रहते हैं उनका नियर पॉइंट much more than 25 centimeter away हो जाता है. So actually presbyopia is a special kind of hypermetropia. So it is a special kind of hypermetropia. So we can call in old age hypermetropia. तो इसे क्या कहते हैं? Old age hypermetropia. So, presbyopia is a hypermetropia caused by the loss of power of accommodation of the eye due to old age. क्योंकि hypermetropia में भी near object clearly नहीं देख पाते और presbyopia में भी. So it is a special kind of hypermetropia. So we can call it old age hypermetropia. So presbyopia is the hypermetropia caused by the loss of power of accommodation of the eye due to the old age. Presbyopia defect is corrected in the same way as hypermetropia by using spectacles having convex lens. It is also possible that the same person have both the defect of vision. और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन को मतलब सेम डिफेक्ट हो, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स उसको ना तो पास का अच्छे से दिखता है और ना ही दूर का अच्छे से दिखता है, हो सकता है. ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया यूजेस स्पेक्टकल्स हैविंग बायफोकल लेंसेज. मीन्स इस कंडीशन में उस पर्सन को बायफोकल लेंसेज यूज करते हैं. बाय मीन्स टू. ओके, मीन्स बायफोकल लेंस में क्या होता है? इन विच अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्केव लेंस, ऊपर वाले पार्ट में कॉन्केव लेंस होता है टू करेक्ट मायोपिया, यूज्ड फॉर डिस्टेंट विजन, एंड द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. और स्पेकल का जो लोअर पार्ट रहता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस रहता है टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पसेस. क्लियर दिस वन? These days it is possible to correct the refractive defect of the eye such as myopia and hypermetropia by using contact lenses or by undergoing surgical procedures. Then there is no need to wear spectacles. Clear this one? Now cataract, yet another defect of the eye which usually comes in old age is cataract. The medical condition in which the lens of the eye of a person becomes progressively cloudy resulting in blurred vision is called cataract. Okay, means blur हो जाता है vision, जो आई लेंस होता है आई का तो वो क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है. इस वजह से क्लाउडी, जब आई लेंस क्लाउडी हो जाता है तो पर्सन का विजन कैसा हो जाता है? ब्लर हो जाता है. ओके, कैटरैक्ट डेवलप्स व्हेन द आई लेंस ऑफ ए पर्सन बिकम क्लाउडी और इवन ओपेक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेम्ब्रेन ओवर इट. तो आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है. ओके, सो कैटरैक्ट डिक्रीजेस द विजन ऑफ द आई ग्रेजुअली. इट कैन इवन लीड टू टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ द आई. तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे मीन्स टोटल विजन उसका लॉस हो जाता है. सो द विजन ऑफ द पर्सन कैन बी रीस्टोर आफ्टर गेटिंग सर्जरी डन ऑन द आई हैविंग कैटरैक्ट. ओके, सो जब सर्जरी कर दी जाती है आई की तो पर्सन का जो विजन है वो अच्छा हो सकता है. द ओपेक लेंस इज रिमूव फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस. जो ओपेक लेंस हो जाता है, ओके, जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है तो वो लेंस को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू और एक न्यू आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट कर दिया जाता है उसके बेस पे. ओके, सो दैट द आई डिफेक्ट कॉल्ड कैटरैक्ट सो कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेकल लेंसेज. ओके, द आई डिफेक्ट कॉल्ड कैटरैक्ट, और जो ये कैटरैक्ट डिफेक्ट है कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेकल लेंसेज. किसी भी टाइप से स्पेकल्स लेंस यूज करके कैटरैक्ट को क्लियर या करेक्ट नहीं किया जा सकता. क्लियर दिस वन?